बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 508 का क्विज़ 4 जो कि करंट क्विज़ है और इसमें जितने भी आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो 100% करेक्ट है और हैंड आउट से वेरीफाइड है। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। अगर आप क्विज़ कर चुके हैं तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें से MCQs आपके पेपर में आ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। फर्स्ट MCQ है हमारे पास, एनी पॉसिबल चेंज ऑफ टर्न पॉइंट इज कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांजिशन रेलेवेंस प्लेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रांजिशन रेलेवेंस प्लेस। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, पॉजिटिव फेस रिफ्लेक्ट्स द डिजायर टू हैव डैश अप्रूव्ड बाय अदर, वन सेल्फ इमेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वन सेल्फ इमेज। Interlanguage pragmatic focuses on dash development of second foreign language learner, pragmatic. Option B is correct, pragmatic. Next MCQ है हमारे पास, micro features in a discourse includes indirectness, all of the given option, episodic cues, turn taking. Option B is correct, all of the given option. आगे हमारे पास है जी, these types of signals you या provides feedback to the current speaker that the message is being received known as back channel. Option B is correct, back channel. Among the following field of linguistics, the feature of dash have been less explored in computational linguistics, pragmatic. Adjacency pair represents social action and not all social actions are equal when they occur and second part of the same pairs. Option D is correct, equal. The generic specific contrast dash from the definite indefinite cross, different. Option D is correct, differs. In interlingual translating model, the basic semantic elements of each language can be represented dash to encoded into other language, abstractly. Option C is correct, abstractly. Could you lend me a pen? ये किस politeness की example है? Positive politeness. Option A is correct, positive politeness. Linguists are of the view that if the strategies presented do not appear dash contextualized, it may be difficult to know how to use them appropriately. Option A is correct, appropriately. नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द जेनेरिक स्पेसिफिक कॉन्ट्रास्ट डैश फ्रॉम द डेफिनेट इनडेफिनेट कॉन्ट्रास्ट, ये रिपीट हुआ है जी, इसका करेक्ट आंसर है डिफर्स। इंटरकल्चरल प्रैग्मेटिक इज बेस्ड ऑन द डैश अप्रोच, सोशो कोग्रेटिव। Politeness is not the same as dash, which is politeness from expressing distance from the respect for people of higher status, difference. Option A is correct, difference. In language text, highlighting and de-emphasizing by the writers is called dash structure, information structure. Option B is correct, information structure. Which among the following assumption does say that face is typically at risk when the other involved with it pre-sequences? Option D is correct, pre-sequences. As an interactive feature of talk, inference entails dash meaning, pragmatic meaning. Option D is correct, pragmatic meaning. Greetings exemplify dash sequences utterance that ease people into conversation opening. जब हम ग्रीटिंग कर रहे होते हैं, किसी से सलाम दुआ करते हैं, तो हम बेसिकली जो कन्वर्सेशन होती है उसकी ओपनिंग कर रहे होते हैं. These types of signals you provides feedback to the current speaker that the message is being received known as back channel. Any possible change of turn point is called transition relevance place. Option C is correct. ये वाला भी MCQ repeat हुआ है. Showing awareness to person's face when the other seems socially distant is known as politeness. Option D is correct, politeness. In interlingual translating model, the basic semantic element of each language can be represented dash to encoded into other language, abstractly. Indefinite noun phrases in English are marked by the A, an, absence of any article, all of the given option. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए और एन होगा, लेकिन यहाँ पे बोथ का ऑप्शन नहीं है तो हम जो है ना ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन करेंगे, लेकिन जो डी है वो करेक्ट नहीं है क्योंकि ए और एन दोनों करेक्ट हैं. Could you lend me a pen? The given statement is example of positive politeness.
Adjacency pair represent social actions and not all social actions are dash when they occur as second part of the some pairs equal. Intercultural pragmatic is based on dash approach, socio-cognitive. Travelers may find that the British put more emphasis on dash politeness than other cultures do, positive. Listener cues are also called dash channel cues, back channel cues. Politeness is not the same as dash, which is polite from expressing distance from and respect to for people of the higher status. Difference. Interlanguage pragmatic is inherently anchored in dash context, acquisition. Option B is correct, acquisition. Intercultural pragmatic is based on the dash approach, socio-cognitive. ये वाला भी repeat हुआ है. In interlingual translating model, the basic semantic elements of each language can be encoded into dash languages abstractly. Any possible change of turn point is called transition relevance place. These types of social signals provides feedback to the current speaker that the meaning is being received, known as back channels. When there is social distance, politeness is dash and there is our indirectness encoded. Option A is correct, encoded. As an interactive feature of talk, reference entails dash meaning pragmatic. Could you lend me a pen? तो ये किस politeness की example है? Positive politeness की. थर्ड टाइम हमारे पास repeat हो रहा है. Most important MCQs है. There are dash situational context factor that influence the way that we make a request. 2. Option A is correct. 2. Given information in the kind of information which is currently in the dash of an addressee's mind. Forefront. Option B is correct, forefront. और last MCQs है हमारे पास. Indefinite noun phrases in English are marked by the a and n. तो ये a और n जो आर्टिकल है इनसे रिप्रेजेंट होती हैं. या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो सी ऑप्शन है ना उन्होंने एब्सेंस ऑफ एनी आर्टिकल दिया हुआ है. तो ए और ये जो बी और डी है ना ये बहुत करेक्ट आंसर है. आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.